नमस्कार जय जगन्नाथ स्वागत करुच्ची मोर आउ एक नुआ वीडियो रे ए वीडियोटी रही आपण मानकर OSSTET एग्जाम 2021 रो क्वेश्चन एवं आंसर डिस्कशन क्लास टी आपण माने जदि OSSTET एग्जाम पई प्रिपरेशन करूछंती आपण मानकर ए वीडियोटी निश्चित हेल्पफुल रहइबो। OSSTET एग्जाम रे आपण मानकर CDP क्वेश्चन रही 50 टी ताहा आज आम डिस्कसन करवा। OSSTET एग्जाम आपण मानकर हाई स्कूल टीचर एलिजिबल पाई दिया जाय एवं 2021 मसीह OSSTET एग्जाम दुई थर आसला फर्स्ट एवं सेकेंड दुई थर ताहा मु आपण मानक पाखरे आज डिस्कसन करी। एहार प्रथम प्रश्न देखंतु व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लर्नर सेंट्रिक लर्निंग निम्नोक्त मध्यरु केउटी आपण मानकर लर्नर सेंट्रिक लर्निंग रो कैरेक्टरिस्टिक्स नुहे। ऑप्शन ए रही टीचर एंड स्टूडेंट्स इवैल्यूएट लर्निंग टुगेदर। ऑप्शन बी रही टीचिंग लीड्स टू इंक्रीज स्टूडेंट लर्निंग एंड लॉन्ग टर्म रिटेंशन। ऑप्शन सी रही अप्रोच इज कंपैटिबल विथ इंटरडिसिप्लिनरी इन्वेस्टिगेशन। ऑप्शन डी रही एम्फासिस इज ऑन कम्युनिकेटिंग नॉलेज इफेक्टिवली। यार सटीक आंसर हो ऑप्शन बी टीचिंग leads to increase student learning and long term retention। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु हु सेड करिकुलम इज ए रिटेन प्लान किए आपण मानकर कहिथिले करिकुलम गोटिए रिटेन प्लान। ऑप्शन ए रही रागन। ऑप्शन बी रही टाइलर। ऑप्शन सी रही अल्बर्ट। ऑप्शन डी रही स्मिथ स्टैनली एंड सर। यार सटीक आंसर हो ऑप्शन डी स्मिथ स्टैनलर एंड सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर द फंक्शन ऑफ SMC एक्सेप्ट। ऑप्शन ए रही रिव्यू कवरेज ऑफ कोर्सेस और स्टडीज। ऑप्शन बी रही सरप्राइज द डेली इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज। ऑप्शन सी रही इंटीमेट द PTA एंड द डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर अबाउट द ग्रांट्स रिसीव्ड एंड यूटिलाइजेशन थियोर ऑफ। ऑप्शन डी रही मॉनिटर द आइडेंटिफिकेशन एंड एनरोलमेंट ऑफ एंड फैसिलिटीज फॉर लर्निंग बाय डिसेबल्ड चिल्ड्रेन। यार सटीक आंसर हो ऑप्शन बी सुपरवाइज द डेली इंस्ट्रक्शनल एक्टिविटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु टू मैक्सिमाइज द return on investment from the organization's human capital and minimize financial risks is the objective of। ऑप्शन ए रही फिजिकल रिसोर्स। ऑप्शन बी रही ह्यूमन रिसोर्स। ऑप्शन सी रही फाइनेंशियल रिसोर्स। ऑप्शन डी रही कम्युनिकेटिव रिसोर्सेस। यार सटीक आंसर हो ऑप्शन बी ह्यूमन रिसोर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु A child is talking with his friend and said, "Mine is gooder." Which theory of language acquisition best explains the use of gooders? ऑप्शन ए रही स्किनर थ्योरी। ऑप्शन बी रही सोशल कॉग्निटिव थ्योरी। ऑप्शन सी रही नॉम चम्स्की थ्योरी। ऑप्शन डी रही नन ऑफ द अबव थ्योरी। यार सटीक आंसर हो ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव थ्योरी। नेक्स्ट प्रश्न देखंतु अकॉर्डिंग टू सोशियोकल्चरल थ्योरी ऑफ वाइगोट्स्की। ऑप्शन ए रही द चाइल्ड थिंक्स इन डिफरेंट डोमेन्स डू नॉट टेक ए कंप्लीट पर्सपेक्टिव। ऑप्शन बी रही कल्चर एंड लैंग्वेज प्ले ए क्रुशियल रोल इन डेवलपमेंट। ऑप्शन सी रही चिल्ड्रेन थिंक इन abstract टर्म्स if presented abstract material at a lower age। ऑप्शन डी रही सेल्फ डायरेक्टेड स्पीच इज द लोएस्ट स्टेज ऑफ द स्कैफोल्ड। यार सटीक आंसर हो ऑप्शन बी कल्चर एंड लैंग्वेज प्ले ए क्रुशियल रोल इन डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु द नीड एंड पर्पज ऑफ एजुकेशनल मैनेजमेंट इज टू enable the right pupils to receive the right education from the right teachers। Who said it? ऑप्शन ए रही ग्राहम वेल्फर। ऑप्शन बी रही कंडेल। ऑप्शन सी रही जेवी थॉम्सन। ऑप्शन डी रही सेली वुमन्स। यार सटीक आंसर हो ऑप्शन ए
ग्राहम बेलफोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु, which theory of concept learning use the characteristics of concept to define them? ऑप्शन ए रही प्रोटोटाइप थ्योरी, ऑप्शन बी रही रूल ड्राइवेन थ्योरी, ऑप्शन सी रही एक्सटेम्पलर थ्योरी, ऑप्शन डी रही बोथ ए एंड सी। यार सठिक आंसर हो ऑप्शन बी रूल ड्राइवेन थ्योरी। नेक्स्ट देखंतु, according to Lawrence Colvert's theory of moral development, at which stage people make decisions based on loyalty, living up to the expectations of other and social conventions? ऑप्शन ए रही सोशल कंस्ट्रक्ट, ऑप्शन बी रही इंटरपर्सनल हार्मोनी, ऑप्शन सी रही यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स, ऑप्शन डी रही लॉ एंड ऑर्डर। यार सठिक आंसर हो ऑप्शन बी इंटरपर्सनल हार्मोनी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु, which of the following Sternberg theory of intelligence focuses on academic proficiency? ऑप्शन ए रही कंपोनेंशियल सब थ्योरी, ऑप्शन बी रही एक्सपेरिमेंटल सब थ्योरी, ऑप्शन सी रही कॉन्टेक्चुअल सब थ्योरी, ऑप्शन डी रही ऑल ऑफ द अबव। यार सठिक आंसर हो ऑप्शन ए कंपोनेंशियल सब थ्योरी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु, in which stage of cognitive development a child can think logically about objects? ऑप्शन ए रही सेंसरी मोटर, ऑप्शन बी रही प्री ऑपरेशनल, ऑप्शन सी रही कंक्रीट ऑपरेशनल, ऑप्शन डी रही फॉर्माल ऑपरेशनल। यार सठिक आंसर हो कंक्रीट ऑपरेशनल। यही थियोरी आपर पियागेट्स थियोरी प्रत्येक वर्ष क्वेश्चन आसपाई आपण से थियोरी को टिके भल भाव देखु। Ria is a 10th class student in your history class. She seems to have a good understanding of the content. That is, she can recite for you the dates and place of the events you have covered in class. However, when you ask the class to defend a point, she often uses the wrong information to support her points. Ria कही देती फास्ट most likely needs helps in increasing her taste. ऑप्शन ए रही प्रियर नॉलेज, ऑप्शन बी रही प्रोसीड्यूरल नॉलेज, ऑप्शन सी रही डिक्लेरेटिव नॉलेज, ऑप्शन डी रही कंडीशनल नॉलेज। यार सठिक आंसर हो ऑप्शन डी कंडीशनल नॉलेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु, the degree to which an assessment actually measures what it is supposed to measure is known as option A validity, option B reliability, option C practicality, option D ethics। यार सठिक आंसर हो ऑप्शन ए validity। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु, in a constructivist classroom as envisioned by Piaget's and Vygotsky learning, option A is directed by the teacher and the students are passive recipients of the same. Option B happens by pairing of stimulus and a response. Option C is offering of reinforcement by the teacher. Option D is constructed by the students themselves who play an active role. यार सठिक आंसर हो ऑप्शन डी is constructed by the students themselves who play an active role. नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु, the teacher can utilize both assessment for learning and assessment of learning to ऑप्शन ए रही monitor children's progress and set appropriate goals to fill their learning gaps. ऑप्शन बी रही now children progress and achievement level. ऑप्शन सी रही now learning needs of child and select teaching strategy accordingly. ऑप्शन डी रही assess children's performs at periodic intervals and certify his or her performance. यार सठिक आंसर हो ऑप्शन बी now children's progress and achievement level. नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु,
NCF 2005 proposes the evaluation system should be based on option A grades, option B marks, option C portfolios, option D both A and B. ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ରହିଯିବ ଅପସନ୍ ଏ ଗ୍ରେଡ୍। To provide a common platform for the state and the center to share their views about improving educational standards is one of the objectives of ऑप्शन ए रही एनसीईआरटी, ऑप्शन बी रही सीईटी, ऑप्शन सी रही सीएबीई, ऑप्शन डी रही एनआईईपीए निपा। यार सठिक आंसर हो ऑप्शन सी सीएबीई। इन लर्निंग असेसमेंट इज इसेंशियल फॉर ऑप्शन ए रही ग्रेड्स एंड मार्क्स, ऑप्शन बी रही स्क्रीनिंग टेस्ट, ऑप्शन सी रही मोटिवेशन, ऑप्शन डी रही फॉस्टरिंग द पर्पज ऑफ सेग्रीगेशन एंड रैंकिंग। यार सठिक आंसर हो ऑप्शन सी मोटिवेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु हु बिलीव्ड दैट एवरी पर्सन could achieve their goals, wishes and desires in life when or rather if they did so, self-actualization took place. ऑप्शन ए रही जीन प्यागेट, ऑप्शन बी रही कार्ल रजर्स, ऑप्शन सी रही इरिक रिक्सन, ऑप्शन डी रही रॉबर्ट जे स्टनबर्ग। यार सठिक आंसर हो ऑप्शन बी कार्ल रजर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु Leadership motivates the people to work and not the power of money. This concept is related to option A रही supportive model, option B रही custodial model, option C रही autocratic model, option D रही collegial model. यार सठिक आंसर हो ऑप्शन बी custodial model। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु according to psychologist Adams, the learning and forgetting is option A रही forgetting means failure at any time to recall, option B रही forgetting is failing to retain, option C रही forgetfulness is voluntary, option D रही true learning is judicious forgetting। यार सठिक आंसर हो ऑप्शन डी ट्रू लर्निंग इज जुडिशियस फॉरगेटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु which component represent the actual mental process used for the execution of a task like task perception, concept identification and response making। ऑप्शन ए रही मेटा कॉन्सेप्ट कंपोनेंट, ऑप्शन बी रही कंपोनेंट्स ऑफ थ्योरी, ऑप्शन सी रही परफॉर्मेंस कंपोनेंट, ऑप्शन डी रही नॉलेज एक्विजिशन कंपोनेंट्स। यार सठिक आंसर हो ऑप्शन सी परफॉर्मेंस कंपोनेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु द बेनिफिट्स ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। ऑप्शन ए रही गाइड्स टीचर्स इन डिसाइडिंग व्हाट दे नीड टू डू टुमारो इन टर्म्स ऑफ इंस्ट्रक्शन, ऑप्शन बी रही प्रोवाइड्स वेरियस स्कोर्स फॉर टीचर्स टू एवरेज इनटू ए ग्रेड, ऑप्शन सी रही गिव्स टीचर्स द अपॉर्चुनिटी टू मेक immediate adjustment in their instruction, option D रही provides feedback to help students adjust and improve their performance। यार सठिक आंसर हो ऑप्शन बी provides various scores for teachers to average into a grade। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु which approach of management stands for the function of elimination of waste in all forms। ऑप्शन ए रही गिस्ट बेनिफिट अप्रोच, ऑप्शन बी रही मेन पावर अप्रोच, ऑप्शन सी रही सोशल जस्टिस अप्रोच, ऑप्शन डी रही नन ऑफ द अबव। यार सठिक आंसर हो ऑप्शन ए गिस्ट बेनिफिट अप्रोच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु The following are the characteristics of self-learning except ऑप्शन ए रही can fulfill the needs of the students, ऑप्शन बी रही the programmed instruction method reduce the problems of the group learning,
ऑप्शन सी रही स्टिमुलस रेस्पॉन्स इन दिस मेथड मोटिवेट द स्टूडेंट्स। ऑप्शन डी रही नन ऑफ दिस। यार सठिक आंसर हो ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु व्हाई माइट ए टीचर चूज टू यूज एन एनालिटिक rubric for his or her students oral presentation। ऑप्शन ए रही बिकॉज ही और सी wants to judge the presentation as a whole। ऑप्शन बी रही बिकॉज ही और सी wants to use a rubric that can be created quickly। ऑप्शन सी रही टू गिव द स्टूडेंट्स स्पेसिफिक फीडबैक। ऑप्शन डी रही टू ग्रेड द प्रेजेंटेशन क्विकली। यार सठिक आंसर हो ऑप्शन सी टू गिव द स्टूडेंट्स स्पेसिफिक फीडबैक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु द फर्स्ट कॉलम फॉर व्हिच मैचिंग इज मेड इज कॉल्ड एज। ऑप्शन ए ऑप्शन, ऑप्शन बी प्रीमिस, ऑप्शन सी रेस्पॉन्सेस, ऑप्शन डी डायरेक्शन। यार सठिक आंसर हो ऑप्शन बी प्रीमिसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेंटल डेवलपमेंट इन एडोलेसेंस एक्सेप्ट। ऑप्शन ए रही एबिलिटी ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग। ऑप्शन बी रही सेल्फ क्रिटिसाइजिम एंड इवैल्यूएशन। ऑप्शन सी रही सिंबॉलिक एंड प्री कॉन्सेप्चुअल थॉट। ऑप्शन डी रही इंक्रीज रेशनल सेल्फ कंट्रोल। यार सठिक आंसर हो ऑप्शन सी सिंबॉलिक एंड प्री कॉन्सेप्चुअल थॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु हु viewed intelligence as how well an individual deals with environmental changes throughout their lifespan। ऑप्शन ए रही रॉबर्ट जे स्टनबर्ग। ऑप्शन बी रही जे.पी. गुलफोर्ड। ऑप्शन सी रही नोमचोम्स्की। ऑप्शन डी रही लिव वाइगोट्स्की। यार सठिक आंसर हो ऑप्शन ए रॉबर्ट जे स्टनबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु which type of attention involves the ability to pay attention to two sets of stimuli at the same time। ऑप्शन ए रही सिलेक्टिव अटेंशन। ऑप्शन बी रही डिवाइडेड अटेंशन। ऑप्शन सी रही अडाप्टेड अटेंशन। ऑप्शन डी रही बाय डायरेक्टेड अटेंशन। यार सठिक आंसर हो ऑप्शन बी डिवाइडेड अटेंशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु द सेकंड MLE वर्कशॉप 2006 was conducted for। ऑप्शन ए रही प्रिपेरेशन ऑफ करिकुलम। ऑप्शन बी रही आइडेंटिफाइंग द थीम्स एज पर नेशनल करिकुलम। ऑप्शन सी रही प्रिपेरेशन ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स इन 10 लैंग्वेज। ऑप्शन डी रही ऑल ऑफ द अबव। यार सठिक आंसर हो ऑप्शन सी प्रिपेरेशन ऑफ इंस्ट्रक्शनल मटेरियल्स इन 10 लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेरिट ऑफ स्मॉल ग्रुप लर्निंग। कौटा आपण मानकर स्मॉल ग्रुप लर्निंग रो मेरिट नुहे। ऑप्शन ए रही द लेवल ऑफ अचीवमेंट इंक्रीजेस। ऑप्शन बी रही इट एनहांस द लीडरशिप क्वालिटी। ऑप्शन सी रही इट क्लियर्स द डाउट्स इन लर्निंग इमीडिएटली। ऑप्शन डी रही मोटिवेशन इज डेवलप्ड अमंग द लर्नर्स। यार सठिक आंसर हो ऑप्शन डी मोटिवेशन इज डेवलप्ड अमंग द लर्नर्स। यार सठिक आंसर ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु ए टीचर मेक्स यूज ऑफ ए वेराइटी ऑफ टास्क टू cater to the different learning style of his or her learners। he or she is influenced by। ऑप्शन ए रही गार्डनर्स मल्टीपल इंटेलिजेंस थियोरी। ऑप्शन बी रही वाइगोट्स्की सोशियो कल्चरल थियोरी। ऑप्शन सी रही पियागेट्स कॉग्निटिव डेवलपमेंट थियोरी। ऑप्शन डी रही कॉल्बर्स मोरल डेवलपमेंट थियोरी। यार सठिक आंसर हो ऑप्शन ए गार्डनर्स मल्टीपल इंटेलिजेंस थियोरी। एवं आउ तीन गोटी आपण मैंने मन रखिए वाइगोट्स्की आपण मानकर सोशियो कल्चरल थियोरी देइथिले, पियागेट्स देइथिले कॉग्निटिव डेवलपमेंट एवं कॉल्बर्ग देइथिले मोरल डेवलपमेंट।
एही मध्यरु किछि क्वेश्चन मध्ये आस्ताय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु, which of the following is the first decision that needs to be made when developing a portfolio? Option A रही what goes in it. Option B रही how and when are the entries selected. Option C रही what should it look like. Option D रही how is the portfolio evaluated. यार सठिक आंसर हो ऑप्शन सी व्हाट शुड इट लुक लाइक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु, द कंटेंट ऑफ ए पोर्टफोलियो इज लार्जली बेस्ड ऑन। ऑप्शन ए रही द गोल एंड पर्पज ऑफ द पोर्टफोलियो। ऑप्शन बी रही द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्टूडेंट इवैल्यूएटेड। ऑप्शन सी रही द लेंथ ऑफ द पोर्टफोलियो। ऑप्शन डी रही नन ऑफ द अबव। यार सठिक आंसर हो ऑप्शन ए द गोल एंड पर्पज ऑफ द पोर्टफोलियो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु, which of the following is used as a guideline for designing a grading system? Option A रही create a system that is clear, understandable and consistent with school. Option B रही base grades on observable data. Option C रही assign grades consistently regardless of gender, class or socioeconomic status. ऑप्शन डी रही ऑल ऑफ द अबव। यार सठिक आंसर हो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु, आर्ट इज ए वेरी इफेक्टिव मीडियम ऑफ। ऑप्शन ए रही एक्सपोजर टू सोशल फेनोमेनन। ऑप्शन बी रही सेल्फ एक्सप्रेशन एंड कम्युनिकेशन। ऑप्शन सी रही डेवलपमेंट ऑफ मोरल वैल्यूज इन लाइफ। ऑप्शन डी रही एक्सप्रेसिंग द हिडन नॉलेज विद इन द चाइल्ड। यार सठिक आंसर हो ऑप्शन बी सेल्फ एक्सप्रेशन एंड कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु, which of the following is not a merit of learning centered approach? ऑप्शन ए रही learners find interest in learning. ऑप्शन बी रही it fosters in learners a sense of cooperation. ऑप्शन सी रही students mostly depends on teacher. ऑप्शन डी रही इमोशनल प्रॉब्लम्स ऑफ लर्नर्स आर प्रॉपर्ली चैनलाइज्ड। यार सठिक आंसर हो ऑप्शन सी स्टूडेंट्स मोस्टली डिपेंड ऑन टीचर्स। यह आपण मानकर लर्निंग सेंटर्ड मेरिट नुहे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु, which of the following does not refers to Vygotsky theory of the tone of proximal development. ऑप्शन ए रही द रेंज ऑफ प्रॉब्लम ए चाइल्ड कैन सॉल्व इफ गिवन सम असिस्टेंस। ऑप्शन बी रही चिल्ड्रन कॉग्निशन रिमेन्स लिमिटेड बाय प्री ऑपरेशनल मोड ऑफ अंडरस्टैंडिंग। ऑप्शन सी रही चिल्ड्रन acquires cognitive structure from cultural and social interactions. ऑप्शन डी रही पेरेंट एंड टीचर्स कैन फोस्टर कॉग्निटिव डेवलपमेंट। यार सठिक आंसर हो ऑप्शन बी चिल्ड्रन कॉग्निशन रिमेन्स लिमिटेड बाय प्री ऑपरेशनल मोड ऑफ अंडरस्टैंडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु, द कॉन्सेप्ट ऑफ अकोमोडेशन इन Piaget's डेवलपमेंट स्कीम implies. ऑप्शन ए रही that these are cognitive structures. ऑप्शन बी रही incorporation of something new in the environment. ऑप्शन सी रही modification or change of an old scheme to learn a new scheme. ऑप्शन डी रही maintaining balance between child and changing equilibrium. यार सठिक आंसर हो ऑप्शन सी modification or change of an old scheme to learn a new scheme. Development of self-assessment and peer assessment skills fall into which category?
ऑप्शन ए रही असेसमेंट फॉर लर्निंग, ऑप्शन बी रही असेसमेंट एज लर्निंग, ऑप्शन सी रही असेसमेंट ऑफ लर्निंग, ऑप्शन डी रही ऑल ऑफ द अबव। यार सठिक आंसर रही ऑप्शन बी असेसमेंट आज लर्निंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु, which of the following is an advantages of peer assessment? ऑप्शन ए रही peer pressure and friendship can influence the reliability of grade, ऑप्शन बी रही it enhance the time and workload of marking for teachers, ऑप्शन सी रही students learn how to criticize, evaluate and apply other generic skills during the process, ऑप्शन डी रही extroverted students can be marked higher। यार सठिक आंसर हो ऑप्शन सी students learn how to criticize, evaluate and apply other generic skills during the process। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु, who developed a theory of motivation called drive reduction theory of reinforcement? ऑप्शन ए रही E.L. थॉर्नडाइक, ऑप्शन बी रही कोर्ट ल्यूएन, ऑप्शन सी रही हेरी हर्लो, ऑप्शन डी रही क्लर्क एल हुल। यार सठिक आंसर हो ऑप्शन डी क्लर्क एल हुल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु, असेसमेंट एंड एग्जामिनेशन शुड, ऑप्शन ए रही assess children's ability to recall textbook language, ऑप्शन बी रही assess according to the answer given in guidebook, ऑप्शन सी रही assess children's ability to use his or her knowledge for problem solving and its application in the real world, ऑप्शन डी रही assess by fixed rule of marking and ranking। यार सठिक आंसर हो ऑप्शन सी assess children's ability to use his or her knowledge for problem solving and its application in the real world। आपण मानकर ता निजर नॉलेज जो साहाଯ୍य किपरि से तार प्रॉब्लम को सॉल्व करि पारुछि ताहा जानिबा पाई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु, अकॉर्डिंग टू NCF 2005 द पर्पज ऑफ इवैल्यूएशन इज नॉट, कोउटी आपण मानकर NCF 2005 पर्पज नुहे। ऑप्शन ए रही टू मोटिवेट चिल्ड्रेन टू स्टडी अंडर थ्रेट, ऑप्शन बी रही टू लेबल द चिल्ड्रेन एज स्लो लर्नर्स, ऑप्शन सी रही टू आइडेंटिफाई चाइल्ड्स हु रिक्वायर्स रिमेडियन, ऑप्शन डी रही ऑल ऑफ द अबव। यार सठिक आंसर हो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु, according to Erickson's theory, industry versus inferiority conflicts is found at to which stage? कौ स्टेज रे आपण मानकर इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियोरिटी कॉन्फ्लिक्ट देखा जाए। ऑप्शन ए रही स्कूल एज, ऑप्शन बी रही अर्ली चाइल्डहुड, ऑप्शन सी रही एडोलेसेंस, ऑप्शन डी रही अडल्टहुड। यार सठिक आंसर हो स्कूल एज। स्कूल एज रे आपण मानकर इंडस्ट्री वर्सेस इन्फीरियोरिटी देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु, ऑथोरिटेरियन मॉडल इज मोर सुइटेबल फॉर, ऑप्शन ए रही डिसिप्लिन, ऑप्शन बी रही कॉन्फिडेंस, ऑप्शन सी रही अचीवमेंट, ऑप्शन डी रही इम्प्रूवमेंट। यार सठिक आंसर हो ऑप्शन ए डिसिप्लिन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु, which of the following characteristics is not reflective of a cognitive view of learning? ऑप्शन ए रही चेंजेस इन नॉलेज लीड टू चेंजेस इन बिहेवियर, ऑप्शन बी रही द आउटकम ऑफ लर्निंग इज एन ऑब्जर्वेबल बिहेवियर, ऑप्शन सी रही रीएनफोर्समेंट इज सीन एज इनफॉरमेशन, ऑप्शन डी रही ह्यूमन्स आर एक्टिव लर्नर। यार सठिक आंसर हो ऑप्शन बी द आउटकम ऑफ लर्निंग इज एन ऑब्जर्वेबल बिहेवियर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु द चीफ रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द हेडमास्टर इज टू हेडमास्टर मानकर आपण चीफ रेस्पॉन्सिबिलिटी कौन रही ऑप्शन ए रही मेंटेन स्कूल रेकॉर्ड्स ऑप्शन बी रही हैंडल डिसिप्लिन प्रॉब्लम्स ऑप्शन सी रही प्रोवाइड लीडरशिप इंस्ट्रक्शनल प्लान ऑप्शन डी रही ऑर्गेनाइज एंड एडमिनिस्टर द गाइडेंस प्रोग्राम यार सठिक आंसर हो ऑप्शन सी प्रोवाइड लीडरशिप इंस्ट्रक्शनल प्लान नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु यह हूँ आपण मानकर 2021 रे आपण फास्ट जो ओएसएसटी एग्जाम आसला तार शेष प्रश्न सीडीपी रो सीसीई इनक्लूड ऑप्शन ए रही प्लेसमेंट इवैल्यूएशन ऑप्शन बी रही फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन ऑप्शन सी रही फॉर्मेटिव इवैल्यूएशन ऑप्शन डी रही इवैल्यूएशन ऑफ बोथ कॉग्निटिव एंड को कॉग्निटिव एरिया यार सठिक आंसर हो ऑप्शन डी इवैल्यूएशन ऑफ बोथ कॉग्निटिव एंड को कॉग्निटिव एरिया यह थिला आपण मानकर 21 रो सीडीपी क्वेश्चन नेक्स्ट आपण मानकर डिस्कस करबा 2021 रे आस्तिबा सेकंड ओएसएसटी एग्जाम रो क्वेश्चन एवं आंसर चलंतु देखिबा 21 सेकंड रे किभଳି क्वेश्चन आस्तिला चलंतु स्टार्ट करबा 2021 सेकंड पेज रे आस्तिबा ओएसएसटी रो क्वेश्चन देखंतु 1 नंबर क्वेश्चन Which one of the following assessment practices will bring out the best in students? Option A रही when students are required to reproduce facts as tested via multiple choice questions. Option B रही when the emphasis is laid upon positive correlation between test scores and students' ability. Option C रही when the marks obtained and the positions secured by the student in the class are the ultimate determinants of success. Option D रही when conceptual change and students' alternative solutions are assessed through several different methods of assessment. यार सठिक आंसर हो ऑप्शन डी यार सठिक आंसर होची ऑप्शन डी when conceptual change and students alternative solutions are assessed through several different methods of assessment. Next question देखंतु which one of the following situations is illustrative of a child centered classroom? Option A रही a class in which the teacher dictates and students are asked to memorize the notes. Option B रही a class in which the textbook is the only resource the teacher refers to. Option C रही a class in which the behavior of students is governed by the rewards and punishments the teacher would given them. Option D रही a class in which the students are sitting in groups and the teacher take turns to go to each group. यार सठिक आंसर हो ऑप्शन डी नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु द स्कोर बेस्ड ऑन स्टैटिकल कंपैरिजन of individual performance with the performance of others in that age group is dash. ऑप्शन ए रही इंटेलिजेंस क्वोटिएंट ऑप्शन बी रही डेविएशन आईक्यू ऑप्शन सी रही फ्लूइड इंटेलिजेंस ऑप्शन डी रही क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस यार सठिक आंसर हो ऑप्शन बी डेविएशन आईक्यू नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु behavior is the movement of an organism or its parts in a frame of reference provided by the organism itself or by external objects or field of force. Which theory of learning does it belong to? Option A रही stimulus response theory. Option B रही theory of synthetic behavior. Option C रही theory of conditional response. Option D रही operant conditioning theory. यार सठिक आंसर हो ऑप्शन डी ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु अकॉर्डिंग टू होम ए शॉर्ट आंसर एसेट आइटम is one in which the examinee supplies the answer in one or two lines and is usually concerned with one central concept. Option A रही Marshall and Hall's.
ऑप्शन बी रही लिन एंड मिलर, ऑप्शन सी रही ग्रनलैंड, ऑप्शन डी रही एनसीएफ 2005। यार सठिक आंसर हो ऑप्शन ए मार्शल एंड होल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, a grading system in which teachers base assessment decisions about an individual's work on comparisons with the work of peers is classified as option A रही norm reference grading, option B रही criterion reference grading, option C रही competitive grading, option D रही none of these। यार सठिक आंसर हो ऑप्शन ए नॉन रेफरेंस ग्रेडिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, which of the following is not the characteristics of formative evaluation? Option A रही its design is exploratory and quite flexible. Option B रही it seeks to identify influential variables. Option C रही it monitors teaching learning strategy during instruction. Option D रही it is almost unobstructive and non-reactive। यार सठिक आंसर हो ऑप्शन डी इट इज ऑलमोस्ट अनऑब्स्ट्रक्टिव एंड नॉन रिएक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, टू व्हिच ऑफ कॉल्बर्ट स्टेजेस एम्पैथी एंड प्रोसोशियल बिहेवियर्स आर मोस्ट क्लोजली रिलेटेड? ऑप्शन ए रही प्री कन्वेंशनल इथिक्स, ऑप्शन बी रही कन्वेंशनल इथिक्स, ऑप्शन सी रही पोस्ट कन्वेंशनल इथिक्स, ऑप्शन डी रही नन ऑफ दिज। यार सठिक आंसर हो ऑप्शन बी कन्वेंशनल इथिक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इन दिस वर्ल्ड ऑफ ह्यूमन अफेयर्स देयर इज नो वर्स nuisance than a boy at the age of 14 if he tells with a childish lips he is called a baby, and if he answers in a grown up way he is called an impertinent. Whose view is it? ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी रही महात्मा गांधी, ऑप्शन सी रही श्री अरविंद, ऑप्शन डी रही एस राधाकृष्णन। यार सठिक आंसर हो ऑप्शन ए रविंद्रनाथ टैगोर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, conditions involving a range of motor or coordination difficulties due to brain damage is known as ऑप्शन ए रही एपिलेप्सी, ऑप्शन बी रही स्पास्टिसिटी, ऑप्शन सी रही सेरिब्रल प्लासी, ऑप्शन डी रही आर्टिकुलेशन डिजॉर्डर्स। यार सठिक आंसर हो ऑप्शन सी सेरिब्रल प्लासी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, which of the following is not a guideline for encouraging creativity? ऑप्शन ए रही ask students to support dissenting opinions, ऑप्शन बी रही use a class brainstorming session whenever possible, ऑप्शन सी रही give ungraded assignments from time to time, ऑप्शन डी रही do not reinforce a pattern of telling secrets। यार सठिक आंसर हो ऑप्शन डी do not reinforce a pattern of telling secrets। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, according to psychoanalytic theory of motivation which of the following is true? psychoanalytic theory रो कोउटी आपण मानकर को ऑप्शन डी ठीक अछि? ऑप्शन ए रही मेन्स बिहेवियर इज डायरेक्टेड बाय हिज विल एंड दैट द विल इज मोटिवेटेड बाय इंटेलेक्चुअल इवैल्यूएशन, ऑप्शन बी रही मोटिवेशन इज एन एलिमेंट ऑफ द हाईएस्ट इंपोर्टेंस इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग, ऑप्शन सी रही ह्यूमन बिहेवियर इज इंस्पायर्ड by the desires lying concealed in the unconscious and subconscious mind of the individual, option D रही emphasized that motivation to work is rotated from psychological to self actualization need। यार सठिक आंसर हो ऑप्शन सी human behavior is inspired by the desires lying concealed in the unconsciousness and subconsciousness mind of the individuals। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, स्कूल बेस्ड मैनेजमेंट इज ए वे फॉर फोर्सिंग इंडिविजुअल स्कूल्स टू टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर व्हाट हैपेंस टू द चिल्ड्रन अंडर देयर
jurisdiction was the view of dash. ऑप्शन ए रही मालेन, ऑप्शन बी रही हाउसमैन, ऑप्शन सी रही कांडोली, ऑप्शन डी रही हालिंगर। यार सठिक आंसर हो ऑप्शन सी कांडोली। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु, in which type of educational management teachers get proper scope for evaluating the assignments in entrusted upon them? ऑप्शन ए रही क्रिएटिव मैनेजमेंट, ऑप्शन बी रही लाइज फेयर मैनेजमेंट, ऑप्शन सी रही डिसेंट्रलाइज मैनेजमेंट, ऑप्शन डी रही डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट। यार सठिक आंसर हो ऑप्शन डी डेमोक्रेटिक मैनेजमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु, the prompting method of memory testing is created by ऑप्शन ए रही एच मोन्स्टरबर्ग, ऑप्शन बी रही एच एविंगस, ऑप्शन सी रही एफरसिस, ऑप्शन डी रही फॉलमैन। यार सठिक आंसर हो ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु, in which phase a child cannot solve a problem alone but can be successful under adult guidance or in collaboration with a more advanced peer? ऑप्शन ए रही जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, ऑप्शन बी रही जोन ऑफ एक्चुअल डेवलपमेंट, ऑप्शन सी रही इनफॉरमेशन प्रोसेसिंग, ऑप्शन डी रही मेटा कग्निशन। यार सठिक आंसर हो ऑप्शन ए जोन ऑफ प्रोक्सिमल डिजिटल डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु, continuous and comprehensive evaluation emphasizes ऑप्शन ए रही ऑप्शन ए हाउ लर्निंग कैन बी ऑब्जर्व्ड recorded and improved upon, ऑप्शन बी रही continuous testing on a comprehensive scale to ensure learning, ऑप्शन सी रही फाइन ट्यूनिंग of test with the teaching, ऑप्शन डी रही redundancy of the board examination। यार सठिक आंसर हो ऑप्शन ए हाउ लर्निंग कैन बी observed, recorded and improved upon। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु, which assessment involves students in the collection and evaluation of materials to be included for examination? ऑप्शन ए रही चेकलिस्ट, ऑप्शन बी रही पोर्टफोलियो, ऑप्शन सी रही रेटिंग स्केल, ऑप्शन डी रही रुब्रिक। यार सठिक आंसर हो ऑप्शन बी पोर्टफोलियो, ऑप्शन बी पोर्टफोलियो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु, which part of the brain is involved in higher cognitive process? ऑप्शन ए रही सेरिबेलम, ऑप्शन बी रही सेरिब्रल कॉर्टेक्स, ऑप्शन सी रही मिड ब्रेन, ऑप्शन डी रही पोन। यार सठिक आंसर हो ऑप्शन बी सेरिब्रल कॉर्टेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु, which of the following is not a characteristic of critical pedagogy? क्रिटिकल पेडागोजी आपण मानकर कौ ऑप्शन टी कैरेक्टरिस्टिक्स नुहे? ऑप्शन ए रही टू एम्पावर स्टूडेंट्स एंड हेल्प देम टू हेल्प देमसेल्व्स, ऑप्शन बी रही टू subjugate students by operating, ऑप्शन सी रही टू प्रमोट इनक्रिप्शन एंड इंटेलेक्चुअल ग्रोथ, ऑप्शन डी रही टू सेंटर इट्स प्रैक्टिस ऑन कम्युनिटी एंड कोलाबोरेशन। यार सठिक आंसर हो ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु, although approximate chronological age are attached to the stages children pass through them at different rates, whose theory of development help us to understand these statements? ऑप्शन ए रही रॉबर्ट एस सियर, ऑप्शन बी रही भाइगोट्स्की, ऑप्शन सी रही पियागेट, ऑप्शन डी रही इरिक्सन। यार सठिक आंसर हो ऑप्शन सी पियागेट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु, a child reasons you do this for me and I will do that for you. In which stage of Kohlberg's moral reasoning would this child fall? ऑप्शन ए रही द गुड बॉय गुड गर्ल ओरिएंटेशन, ऑप्शन बी रही द सोशल कॉन्ट्रैक्ट ओरिएंटेशन, ऑप्शन सी रही द इंस्ट्रूमेंटल पर्पज ओरिएंटेशन, ऑप्शन डी रही द पनिशमेंट एंड ओबीडियंस ओरिएंटेशन। यार सठिक आंसर हो ऑप्शन सी द इंस्ट्रूमेंटल पर्पज ओरिएंटेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु, ongoing process of arranging information and experience into mental system or categories is known as, ऑप्शन ए रही assimilation, ऑप्शन बी रही accommodation, ऑप्शन सी रही organization, ऑप्शन डी रही equilibrium।
यार सठिक आंसर हो ऑप्शन सी ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु all of the following promote assessment as learning accept। ऑप्शन ए रही टेलिंग स्टूडेंट्स टू टेक इंटरनल फीडबैक। ऑप्शन बी रही जनरेटिंग ए सेफ एनवायरनमेंट फॉर स्टूडेंट्स टू टेक चेंजेस। ऑप्शन सी रही टेल स्टूडेंट्स टू रिफ्लेक्ट ऑन द टॉपिक टॉट। ऑप्शन डी रही टेस्टिंग स्टूडेंट्स एज फ्रिक्वेंटली एज पॉसिबल। यार सठिक आंसर हो ऑप्शन डी टेस्टिंग स्टूडेंट्स एज फ्रिक्वेंटली एज पॉसिबल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु which one of the following is a good example of learning of a problem solving task till the students are able to do it by themselves? Option A रही offering a reward for solving the problem quickly. Option B रही telling them that they can do it by trying again and again. Option C रही providing a half solved example. Option D रही telling them they cannot go home till they solve the problem. यार सठिक आंसर हो ऑप्शन सी प्रोवाइडिंग ए हेल्प सॉल्व एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु द फॉलोइंग आर द मेन ऑब्जेक्टिव्स of international conference and on educational planning held at Paris in 1968 except option A रही to examine critically the experiences of educational planning over the past 10 years। option B रही to assess major attendance and problem with which educational planning is likely to have to deal in the next 10 years। option C रही to assess cooperative learning groups and difficulties of implementing multi-age education। option D रही to develop practical guidelines for helping individual nations। यार सठिक आंसर हो ऑप्शन सी टू एसेस कोऑपरेटिव लर्निंग ग्रुप्स एंड डिफिकल्टीज ऑफ इम्प्लीमेंटिंग मल्टीपल एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु there should be more varied modes of assessment beyond the examination hall। paper prints paper pencil test was the recommendation of NEP 2020 NCF 2005 NPE 1986। ऑप्शन डी रिवाइज NPE 1992। यार सठिक आंसर हो ऑप्शन बी NCF 2005। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु व्हिच ऑफ द फाउंडर ऑफ क्रिटिकल पेडागोजी ର फाउंडर किए? ऑप्शन ए पॉलो फेरे, ऑप्शन बी पॉल विल्स, ऑप्शन सी इरासर, ऑप्शन डी सेलेस्टेनबर्ग। यार सठिक आंसर हो ऑप्शन ए पॉलो फेरी आपण मानकर देइतिले क्रिटिकल पेडागोजी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु Rousseau's theory on adolescence was criticized by the psychologist because option A रही it was not purely philosophic in nature। option B रही it was not based on observation and experiments। option C रही he was a devoted parent। option D रही he did not analyze the self expression of children। यार सठिक आंसर हो ऑप्शन बी it was not based on observation and experimentation। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु which of the following is a guideline for the teachers to deal with the learning disabled students? ऑप्शन ए रही ब्रेकिंग असाइनमेंट्स इनटू वेरी स्मॉल स्टेप। ऑप्शन बी रही मेक श्योर स्टूडेंट्स आर बीइंग रेनफोर्स्ड फॉर देयर सक्सेस। ऑप्शन सी रही वर्क ऑन द लर्निंग प्रॉब्लम डायरेक्टली। ऑप्शन डी रही ऑल ऑफ द अबव। यार सठिक आंसर हो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु ए स्केल with a set of points which describe varying degrees of the dimension of an attribute under observation is known as option A रही aptitude scale, option B रही rating scale, option C रही aptitude scale option C attitude scale, option D रही questionnaire and pseudals। यार सठिक आंसर हो ऑप्शन बी रेटिंग स्केल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु according to Piaget the ability to infer a relationship between two objects based on knowledge of their relationship with a third object developed at which stage? ऑप्शन ए रही सेंसरी मोटर, ऑप्शन बी रही प्री ऑपरेशनल, ऑप्शन सी रही कंक्रीट, ऑप्शन डी रही फॉर्माल ऑपरेशनल। यार सठिक आंसर हो ऑप्शन सी कंक्रीट ऑपरेशनल। whose name is strongly associated with the
apparatus of puzzle box? Option A ରହିଛି Skinner, option B ରହିଛି Pavlov, option C ରହିଛି Thorndike, option D ରହିଛି Tolman। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହେଇଯିବ ଅପସନ୍ ସି ଥଣ୍ଡାଇକ୍। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ। NCTE as a statutory body came into existence in purposes of the NCTE Act 1993 on the dash। ऑप्शन ए रही 17 अगस्त 1993, ऑप्शन बी रही 7 अगस्त 1995, 5 सेप्टेम्बर 1995, ऑप्शन डी रही 10 डिसेम्बर 1994। यार सठिक आंसर हो ऑप्शन बी 7 अगस्त 1995। नेक्स्ट देखंतु। द एसे टेस्ट proposes relatively low validity and reliability because of the following factors except। ऑप्शन ए रही इट कैन बी assessed only by a teacher or competent professionals। ऑप्शन बी रही इट मे नॉट प्रोवाइड ए ट्रू पिक्चर ऑफ द comprehension level of the learner। ऑप्शन सी रही द learners focus on learning broad concept and articulating relationship। ऑप्शन डी रही good verbal ability even in the sense of relevant point। यार सठिक आंसर हो ऑप्शन सी द लर्नर फोकस ऑन लर्निंग बोर्ड कॉन्सेप्ट एंड आर्टिकुलेटिंग रिलेशनशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु। असेसमेंट फॉर लर्निंग टेक्स इनटू अकाउंट द फॉलोइंग एक्सेप्ट। ऑप्शन ए रही क्वालिटेटिव इंप्रूवमेंट इन लर्निंग, ऑप्शन बी रही लर्निंग स्टाइल ऑफ स्टूडेंट, ऑप्शन सी रही डेवलप पर्सनल सोशल स्किल्स, ऑप्शन डी रही मिस्टेक्स द स्ट्रेंथ ऑफ स्टूडेंट्स। यार सठिक आंसर हो ऑप्शन सी डेवलप पर्सनल सोशल स्किल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु। Who has suggested that people are motivated by a hierarchy of needs beginning with basic psychological equipment and moving up to the need for self fulfillment। ऑप्शन रही जे अटकिंसन, ऑप्शन बी रही किली, ऑप्शन सी रही मास्लो, ऑप्शन डी रही बी ओनर। यार सठिक आंसर हो ऑप्शन सी मास्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु। Characterization by value, which is one of the objective of Bloom's taxonomy, comes within which domain। ऑप्शन रही कॉग्निटिव, ऑप्शन बी रही अफेक्टिव, ऑप्शन सी रही साइकोमोटर, ऑप्शन डी रही नन ऑफ दिस। यार सठिक आंसर हो ऑप्शन बी अफेक्टिव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु। Which of the following is a physical or material resource for education। ऑप्शन रही इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टीज, ऑप्शन बी रही स्पॉन्सरशिप, ऑप्शन सी रही अलुमिनी, ऑप्शन डी रही अंडोमेंट्स। यार सठिक आंसर हो ऑप्शन बी स्पॉन्सरशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु। इन एमसीक्यू आइटम द प्रॉब्लम पार्ट इज कॉल्ड एज। ऑप्शन ए रही डायरेक्शन, ऑप्शन बी रही फॉलियस, ऑप्शन सी रही स्टेम, ऑप्शन डी रही डिस्ट्रैक्टर। यार सठिक आंसर हो ऑप्शन सी स्टेम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु। Which of the following is the main objectives of continuous assessment। ऑप्शन ए रही to find out the extent to which the objectives have been achieved, ऑप्शन बी रही to discover how for the learning experiences in the classroom have provided effectively, ऑप्शन सी रही to learn how successfully the aims of education have been fulfilled, ऑप्शन डी रही to help the learners to understand their progress in learning। यार सठिक आंसर हो ऑप्शन डी to help the learners to understand their progress in learning। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु। What do you mean by rule easy method। ऑप्शन ए रही टीचिंग और लर्निंग बाय मूविंग फ्रॉम स्पेसिफिक एग्जांपल्स टू जनरल रूल्स, ऑप्शन बी रही टीचिंग और लर्निंग बाय मूविंग फ्रॉम जनरल प्रिंसिपल टू स्पेसिफिक एग्जांपल, मेकिंग इमेजिनेटिव लीड्स टू करेक्ट perceptions, ऑप्शन डी रही टीचर्स प्रेजेंट मटेरियल इन कंप्लीट ऑर्गेनाइज्ड फ्रॉम मूविंग फ्रॉम ब्रॉडेस्ट टू मोर स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट। यार सठिक आंसर हो ऑप्शन डी ऑप्शन बी टीचिंग और लर्निंग बाय मूविंग फ्रॉम जनरल प्रिंसिपल टू स्पेसिफिक एग्जांपल। रोल ऑफ टीचर्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ क्रिटिकल पेडागोजी इज आर। ऑप्शन ए रही कोलाबोरेटिव एंड कोऑपरेटिव लर्निंग, ऑप्शन बी रही प्रमोट गुड सिटीजन क्वालिटी फॉर फ्यूचर सोसाइटी, ऑप्शन सी रही डेवलपमेंट ऑफ कैपेबिलिटी ऑफ लर्नर्स, ऑप्शन डी रही ऑल ऑफ द अबव। यार सठिक आंसर हो ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखंतु। मोटिवेशन इज द स्टिमुलेशन ऑफ एक्शंस टुवर्ड्स ए पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव्स व्हेयर प्रीवियसली देयर वाज लिटिल और
no attraction to that goal. This definition was given by option A ରହିଛି W.A. Kelly, option B ରହିଛି T.W. Atkinson, option C ରହିଛି F.G. McDonald, option D ରହିଛି S.W. Bernard। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ରହିଯିବ option D, H.W. Bernard। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, organizing pre-service and in-service training of teachers, develop and disseminate innovative educational teaching techniques and practices are the objectives of which organization? NCTE, National Curriculum of Teacher Education। ଏହାର ସଠିକ୍ ଆନ୍ସର ହୋଇଯିବ ଅପସନ୍ ଏ, NCTE। ନେକ୍ସଟ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ ଦେଖନ୍ତୁ, which of the following is not a characteristic of blueprint? Blueprintର ଆପଣମାନଙ୍କର କେଉଁ ଅପସନ୍ଟି characteristics ନୁହେଁ? ऑप्शन ए रही वेटेज आर गिवेन टू ऑब्जेक्टिव्स एंड कंटेंट्स, ऑप्शन बी रही वेटेज टू फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस इन टर्म ऑफ मार्क्स, ऑप्शन सी रही ए 2-dimensional चार्ट, ऑप्शन डी रही इट प्रोड्यूस ए लिंक बिटवीन टेस्ट आइटम्स एंड पेपर सेटर्स पॉलिसी डिसीजन। यार सठिक आंसर हो ऑप्शन डी, इट प्रोड्यूसेस ए लिंक बिटवीन टेस्ट आइटम्स एंड पेपर एंड पॉलिसी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बेनिफिट ऑफ पीयर असेसमेंट? पीयर असेसमेंट ऑफ बेनिफिट कौ ऑप्शन टी? ऑप्शन ए रही इट कैन असाइन इन डिपेंडिंग द स्टूडेंट्स ऑन परसेप्शन, ऑप्शन बी रही इट हेल्प्स नरोइंग द गैप बिटवीन वंस इमेजिन व्यू ऑफ टीचिंग एंड व्हाट एक्चुअली ऑकर्स, ऑप्शन सी रही इट हेल्प स्टूडेंट्स टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग द ऑब्जर्वेशन प्रोसेस, ऑप्शन डी रही इट मेक्स ए स्टूडेंट टू बिकम मोर इंडिपेंडेंट लर्नर। यार सठिक आंसर हो ऑप्शन बी, इट हेल्प्स नरोइंग द गैप बिटवीन वंस इमेजिन व्यू ऑफ टीचिंग एंड व्हाट एक्चुअली ऑकर्स। Which of the following is not a guideline for the teachers to develop problem solving qualities of learners? Option A रही ask the student if they are sure they understand the problem, option B रही encourage attempts to see the problem from different angles, option C रही pose a question and let students try to find the answer, option D रही teach heuristic। यार सठिक आंसर हो ऑप्शन सी, pose a question and let students try to find the answer। नेक्स्ट क्वेश्चन रही एवं यह रही आज शेष क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू MC डगलेस एज व्यूज नेगेटिव सेल्फ फीलिंग इज एसोसिएटेड विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेंथ? यार ऑप्शन ए रही सबमिशन, ऑप्शन बी रही एक्विजिशन, ऑप्शन सी रही सेल्फ एसेप्शन, ऑप्शन डी रही रेपुलेशन। यार सठिक आंसर हो ऑप्शन ए, सबमिशन। यह थिला आजिर शेष प्रश्न। भिडियोटी जदि भल लगी था निहाती गोटे गोटे लाइक करूँ और चैनल जदि प्रथम थर पर देखुं चैनल को सब्सक्राइब कर रखुँ एमती नुआ नुआ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन डिस्कसन वीडियो पाइबापी एवं सांगसाथी मैंने जो मैंने आपर OSST एग्जाम प्रिपेरेसन करुँच से सेयार कर दिंतु जद्वारा कि से वीडियोटी देखिबार सुजोग पाइबे एवं एग्जाम रे भल करिवे। वीडियोटी देखि धन्यवाद। जय जगन्नाथ।